हेलो बच्चों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से लोकल क्लासेस में। और हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10 के MCQs का सेकंड पार्ट। तो बच्चों, उसके लिए हम पहले कुछ फॉर्मूलोज को देख लेते हैं। सम ऑफ zeros of a polynomial is minus b upon a, product of zeros is c upon a, and to find the zeros, minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a, and the standard equation is my ax square plus bx plus c is equal to 0। तो इन फॉर्मूले की मदद से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2/3 एंड 2/3। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जीरोस आ जाती है -2/3 एंड 2/3। सो दिस इज माय करेक्ट आंसर। सेकंड इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल √3x square minus 8x plus 4 √3 आर। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और हमारे पास आंसर आता है 2/√3 एंड 2√3। थर्ड क्वेश्चन इज the zeros of polynomial 4x square minus 12x plus 9। अगेन हम अगर इसको सिंपली फैक्टराइज भी कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3/2 and 3/2 same two roots। Next is the zeros of polynomial x square plus px plus q are twice the zeros of polynomial 4x square minus 5x minus 6, then the value of p। तो इसके लिए हम पहले 4x square minus 5x minus 6 की जीरोस निकाल लेते हैं और उसके बाद डबल करके हमारा आंसर आ जाता है a is equal to -5/2। Next is, if the polynomial px x square minus 5x plus 6, then the value of p1 plus p4। तो इसमें हम x की जगह वैल्यू 1 और 4 रख देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है 4। A quadratic polynomial, one of whose zero is 2 plus √5 and the sum of zeros is 4। तो हमें वो पॉलिनोमियल निकालनी है। हम सम ऑफ जीरोस करके देख लेते हैं। हमारी जो सेकंड जीरो आ जाएगी वो 2 -√5 आएगी। तो हमारी जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी वो आएगी x square minus 4x minus 1। नेक्स्ट इज द अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial x square minus 1, then अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, इसमें हमारे पास x वाली टर्म ही नहीं है, तो सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, तो वो हमारा आएगा 0। Next is, if alpha and beta are zeros of polynomial px square minus 2x plus 3p and alpha plus beta is equal to alpha beta, then p is। तो हमारा alpha plus beta -2/p हो जाएगा और alpha beta हो जाएगा 3। तो उससे हम निकाल पाएंगे p की वैल्यू है हमारी -2/3। नेक्स्ट इज, if alpha and beta are zeros of polynomial 4x square minus 3x minus 7, then find the value of 1/alpha plus 1/beta। तो 1/alpha plus 1/beta का एलसीएम ले लेते हैं, यह आ जाता है हमारा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। तो सम ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड द आंसर कम्स आउट टू बी d -3/7। Next is, if alpha and beta are zeros of polynomial 2x square minus 4x plus 5, then alpha square plus beta square। तो that will be alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta, और उससे हमारी वैल्यू निकल आती है c, that is -1। If -1 is the zero of polynomial x square minus 7x minus 8, then the other zero is। इससे सम ऑफ जीरो से हम निकाल लेंगे। हमारा सम ऑफ जीरो आ रहा है 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। The sum of zeros of polynomial √2x square minus 17। अब इसमें भी हमारे पास x की टर्म नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। हमारे ये हो गए हैं 12 क्वेश्चन। इसके बाद हम करते हैं 3 क्वेश्चन और। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if
A and B are zeros of x square plus ax plus b, then the value of A and B, and the options are 1 2, 1 minus 2, minus 2 1, and 2 1. Now sum of zeros is A plus B, because zeros are A and B. So A plus B is equal to A, and A into B is equal to B. So A is equal to B upon B is equal to 1, and A 1 plus B is equal to 1, that is B is equal to, A plus B is equal to minus A. A plus B is equal to minus A and AB is equal to B. तो A आपका 1 आ गया है, ये आ जाएगा मेरे पास -1, तो B will be -1, -1 is equal to -2. So my answer will be B. Next question is, if the sum of zeros of polynomial kx square plus 2x plus 3k is equal to product of zeros, find value of k. And options are 1 upon 3, minus 1 upon 3, 2 upon 3 and minus 2 upon 3. तो बच्चों सम ऑफ जीरोस मेरा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो -2 अपॉन के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा मेरा 3k upon k, that is 3. So -2 upon k is equal to 3 and k is -2 upon 3. So my answer is D. Next question is, if one zero of polynomial three x square plus 8x plus k is reciprocal of the other, then the value of k. Now product of zeros is k upon 3. Now he is saying 1 0 is reciprocal of other. If alpha is 1 0, the other is 1 upon alpha. So multiplying alpha into 1 upon alpha. So k upon 3 comes out to be 1. Then k is equal to 3. So 3 is my correct answer. So बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट MCQs अगले चैप्टर के हम लेकर फिर आएंगे. धन्यवाद.